window. ठीक है. So can you see title of the lecture, which is lecture 2 analog electrical devices, on your screens, students? जी students, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are starting lecture 2, which is analog electrical devices. So typically electrical devices can be divided into two types: analog electrical devices and digital electrical devices. ठीक है, आप में से कितने लोगों को एनालॉग और डिजिटल के डिफरेंस का पता है? Anyone? स्टूडेंट बता सकते हैं what is the difference between analog and digital electrical device? स्टूडेंट कोई भी बता दें, बेशक गलत हो. गिव मी एन आइडिया. सर एनालॉग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो 220-230 वोल्ट पर सच चलते हैं. अच्छा, और डिजिटल कौन से होते हैं? स्टूडेंट कोई और बता सकते हैं व्हाट्स द डिफरेंस? जी सर जो मैकेट्रॉनिक्स सर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोड पे जो चलते हैं सर. अच्छा, चने पिछले लेक्चर में हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के डिफरेंस डिस्कस किया था. कितने लोगों को याद है वो? सर याद है. तो एक सिग्नल वो होता है जो कि कंटिन्यूस होता है इन टाइम एंड मैग्नीट्यूड, और दूसरा सिग्नल वो होता है कि जो कि डिसकंटिन्यूस होता है इन बोथ टाइम एंड मैग्नीट्यूड. जो कंटिन्यूस सिग्नल है उसे हम कंटिन्यूस सिग्नल भी कहते हैं, और एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूस सिग्नल की फॉर्म में होते हैं. जबकि डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल डेटा जो होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, या जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो डिसकंटिन्यूस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन टाइम डोमेन में वो डिसकंटिन्यूस होते हैं. याद है वो प्लॉट आप लोगों को? यस सर. ठीक है. सो द डिवाइसेस which deals with analog signals, ठीक है, हम उन्हें analog devices कहते हैं, यानी the signal that is continuous in both time and magnitude domain. जबकि the devices which deals with discrete signals, or the signal which are discontinuous in both time and magnitude, are called discrete devices, or in other words, we can say digital devices. We will study about discrete and digital in the next chapter, which is chapter 7 of Figliola. यहाँ तक clear है students? Yes sir. कोई क्वेश्चन है इस सिलसिले में? नहीं है? ठीक है. So in reality, most of our signals are continuous signals, means which are of this form. For example, one of the signal might be like this. And there are not many pure discrete signals by nature. हमारे पास ज़्यादातर जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है. डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास बहुत कम डेटा होता है. The reason that when we say digital devices, usually with digital devices, at least with digital measurement devices, usually we convert analog signal into digital signal by using ADC, analog to digital converter. ठीक है? But there are also some discrete data in nature
But when we are talking about measuring instruments, most of those instruments are not digital instrument. Most of those instruments are digital instruments because they usually take, not always, usually take, not, I need to stress that not always, but usually the digital measurement devices take an analog signal and convert it into a digital signal using analog to digital conversion. Okay? And there is a process which is called sampling. That is a process through which analog signal is converted into digital signal. We will discuss in more details about that in the next chapter of Figliola book, which is chapter 7. Right now, we are discussing chapter 6 of Figliola. Okay? Now, coming to the next slide. So, hopefully, at the end of this lecture, you will be able to understand the principle behind common analog voltage and current measuring devices. You will also understand the operation of balanced and unbalanced resistance bridge circuits and define, identify, and minimize loading errors. So these are the 3 objectives of this lecture. Okay. Now, analog current measurement device, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, galvanometer आप पढ़ चुके हैं, ammeter आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? Those are analog current measurement devices. So this lecture will give you a little bit of review of how those devices work, but I assume that you have already studied what those devices are and how they function. Clear? Is that correct, student? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं? Yes, sir. ठीक है. So right now in this slide we have a conductor. ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है? This is a conductor and there is some current I that is passing through this conductor, and this conductor lies in a perpendicular magnetic field, ठीक है? And when this current passes through the conductor, there is a force. So current I passes through a conductor of length L, which is perpendicular to a magnetic field B. Okay? Now this conductor, when current passes through this conductor, will experience a force F. Okay? In case the magnetic field and the conductor are not perpendicular to each other, if this is the case, like in this diagram, the conductor is perpendicular to the direction of magnetic field. So we will apply this formula. In case the conductor is not perpendicular to the direction of magnetic field, then we will use this vector formula. Okay? Similarly, a current loop, okay? A current loop in a magnetic field experience a torque of, if the loop is not aligned with magnetic field as illustrated in figure. So this is for a loop. ठीक है? Loop से मुराद क्या है कि for example, if these are magnetic field lines, ठीक है, और इसके अंदर एक इस तरह की इसके अंदर एक इसके अंदर एक इस तरह की loop of wire conductor, ठीक है? There is a conductor loop of wire, ठीक है? Loop से मुराद क्या है? गोल, ठीक है? There is a loop of wire. Now, if you look at this diagram from the top view, so you will see these
magnetic lines, ठीक है, magnetic field lines, and these lines represents top view of the multi-loop circuit. Multi-loops है, ठीक है, top view of the multi-loop circuit, ठीक है. Now each of the conductor, like one of the conductor on this side, the other conductor on this side, so like one of the conductor is in this side, or the current is passing in this direction. On the other conductor, which is on the other side of the loop, the current is passing in the downward direction, because the current directions are opposite to each other. Therefore, the forces experienced by the two are opposite to each other, and these two opposite forces will result in a couple, and that couple will result in a torque being applied to the loop. So if you have a single wire carrying electrical current in a magnetic field, in this case, the wire will only experience a force. But if you have a loop in a magnetic field, in that scenario, the loop will experience a torque, okay, which will try to rotate the loop about its axis. Question, students, do you have any question? No, sir. No, sir. Okay. So what is n? N किसी को पता है what is n in the torque formula? कोई बता Sir, सकते हैं? number of turn. Number of turns, very good. I Number of loops, sir. बिल्कुल Number of सही. loop. और I क्या चीज है? Current. Current passing through the loop. और A Current क्या चीज है? conductor. हाँ, A क्या चीज है? Area. Area through हाँ, which perpendicular. हाँ, perpendicular, or the cross-sectional area of the loop, और उसकी direction कौन सी होगी? Perpendicular to the plane of the plane which contains the loop. ठीक है, वो आप लोगों को पता है. और sin alpha क्या चीज है? Is the angle between the magnetic field lines and the area of the loop, area direction of the loop, vector area direction of the loop. क्लियर है यहां तक? आगे जाऊं? Yes, sir. ठीक है. अच्छा. Now, based on the phenomena that we studied in the previous lecture, we can design a we can design a mechanism that can use the phenomena that we studied in the previous slide to measure electrical current. Okay? So what we do, we have a permanent magnet, north side and south side. So there will be a magnetic field lines which moves from one pole to another pole, and then we have a loop of conductors, multi-loop conductors, different like number of turns, and this loop is pivoted at the center of the loop. Okay? This is pivoted here. Okay? And then now you can imagine if certain current passes through the loop, what will happen? The loop will try to rotate. Okay? Now if we let this loop keep on rotating, then it will behave like an electric motor. Of course, it's a little bit complicated for electrical motor, but this is kind of the concept of how you can create an electric motor. But here right now, we don't want to create an electric motor. Rather, we want to measure the current, some unknown current. So what we do, we don't let the loop rotate
rather we connect a spring, ठीक है, rather we connect a spring to the pivot point so that when the loop try to rotate, the spring resists the rotation of the loop. And the higher is the loop angle of rotation, the higher is the restoration torque of the spring applied on the loop against its rotation. यहाँ तक clear है students? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Now, can you imagine that if everything else is constant, if we go into the previous slide, if everything else is constant, that is number of turns is not changing, magnetic field is constant, area is constant, okay, only sine alpha changes, but let's assume for now it is constant. If current is the only variable, then can you see from this relationship that we can that the rotation angle of this loop is proportional to the current passing through the loop? Do you see this relationship, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what we do, but right now, so we just attach a needle to this conductor loop. As the conductor loop rotates on its axis of rotation, the needle moves on a certain scale that we haven't labeled yet. So now we kind of have an electric current measurement device right now here, but we cannot use it right now. We need to do something about it. क्या करेंगे students? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट बना लें, सो ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहले आपने क्या करना है? कैलिब्रेट करेंगे सर। बिल्कुल सही। सो वी विल डू कैलिब्रेशन। और आपके ख्याल में हम कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? एनी स्टूडेंट कोई भी बता दें। सर किस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे? ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे या हम कोई नोन इनपुट देंगे और इसके आउटपुट को हम नोट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना? यस सर। यस सर। जी सर। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, हम इसको जीरो, हाँ, सबसे पहले मैं इसको 0 मिली एम्पेयर करंट देता हूं। ठीक है, 0 मिली एम्पेयर करंट देता हूं। जब 0 मिली एम्पेयर करंट होगा तो देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द लूप, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द लूप। तो ये लूप जो होगी वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से हमारी नीडल ये इस पॉइंट पे रुक जाएगी और इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज 0 मिली एम्पेयर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं अपने करंट को इंक्रीज करूंगा, एक नोन करंट 10 मिली एम्पेयर करंट प्रोवाइड करूंगा। व्हेन आई अप्लाई 10 मिली एम्पेयर, तो मिसाल के तौर पे ये नीडल यहां पे आके रुक गई, तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसके बाद हो सकता है मैं 20 मिली एम्पेयर करंट प्रोवाइड करूं। So needle, let's suppose needle comes here and stops here. Now this point, I will label it as 20 milliampere. Now, if you look at this calibration, this is basically a 3-point calibration. ठीक है, हमने 3 points पे calibration की है ना, minimum पे, ठीक है, या 0 milliampere पे, 10 milliampere, which is the medium of the total possible middle point of the total possible needle motion or rotation, and then we did 20 milliampere, which corresponded to the full needle deflection or full needle rotation possible in this scheme of the mechanism. ठीक है, now this is called 3-point
calibration. Of course, you can have 4 points, if you can have 10 points. If you have 3 points calibration, and if you know that this device is a linear device, then you can divide the in-between spaces in regular interval, आप regular interval पे divide कर सकते. But what if you do not know that this is a linear device? Then in that case, you will need to do more than 3 points. Okay? So right now, we did 0 point, maximum point, and middle points. Let's suppose I connect these 3 dots and it's a straight line. So yes, probably it's a straight line. It's a straight line, and it's a linear device, but there is a possibility that the device might be a non-linear device, but the 3 point that I selected, they may make it look like a linear device, but actually the device is not linear. So in that case, I'm required, or I should, to be more sure that the device actually is a linear device, I should take more than 3 points for calibration. So let's suppose I do one other point, another point, okay? And then if I join them, it's a linear device. But even here, there is a possibility that it's a non-linear device. So in general, if you are performing calibration, the minimum that you should do is a 3-point calibration, but the more point you use, input point you use for calibration, the better the calibration is. But at the same time, it's time consuming, and it's, of course, it requires the resources and time to do the calibration, so it will be expensive if you do many points calibration, and if you are doing performing calibration on a lot of instruments, so it will be very time consuming and expensive. So coming back to the slide, do you have any question regarding this instrument, electric current measurement instrument, and the calibration of this instrument? सर तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि एक डिवाइस लीनियर है या नहीं लीनियर, क्योंकि आपने बताया कि एक लीनियर ऐसे हमें रिजल्ट मिल जाता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये लीनियर है, हाँ, लेकिन लीनियर होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिवाइस हम उस पर यकीन नहीं कर सकते कि ये लीनियर है जब तक कि अच्छा, हम उस फुल प्लॉट ना करें। okay, let me answer it like this. सबसे पहले, if you know the working principle of the device and you know the equation of the device, then just by looking at the device equation, you can tell whether it's a linear device or a non-linear device. ठीक है? Second, if you do not know the equation of the device, okay, or even you are not sure that even though the equation of the device is a linear equation, but there might be some non-linearity that you didn't take into account while you are deriving the equation of the device. In that case, the only possibility for you to ascertain whether the device is linear or non-linear is to perform multi-point calibration. So yes, ultimately, to confirm whether in reality the device will behave linearly or non-linearly, you have to perform multi-point calibration, and usually a calibration that contains many points, not just 2 or 3 or 5 points. You do a calibration containing many points for calibration. Okay? Now, this mechanism is called a D-Urson-Wall arrangement. Okay? And it's shown in figure 6.3. The uniform radial magnetic field and torsional spring result in steady angular deflection of the coil that corresponds to the existing current through the coil. जो अभी बातें हमने डिस्कस की हैं, उसकी statement है, the coil and fixed permanent magnets are arranged in normal direction to the current loop, that is alpha is equal to 90 degree. ठीक है? The deflection, now we can use this device in two modes. One is called deflection mode, the other one is called null mode. Okay? ठीक है? Now,
So let me explain deflection mode. Now this deflection mode and null mode. It's not only for D'Arsonval arrangement instrument. These two modes of measurements are applicable to a lot of different devices. So let's take an example of a weight balance, or of something that we measure weight, or let's say mass of an object, or weight of an object. So there are two methods. Okay. One method is the deflection method. So like your digital weight balances, so there is a screen, or let's even mechanical weight balances. So there is a screen. Okay. There is a screen and there is a pointer on the screen. Initially, the pointer is on 0, but when you stand up on this weight balance, the pointer deflects to some new position and there is some value. So the pointer actually deflects to a non-zero position on the scale, and you read that value, and that value is the actual value of measurement. So this is called a deflection mode of measurement for an instrument. Now, we can have another instrument for weight measurement, okay? And this instrument, you have seen it in the shop. So it's a stick with two pans. Okay? And the shopkeeper hold it from here. ठीक है, यहां से ये इसको हाथ में पकड़ लेता है. ठीक है, and then he puts the stuff that he wants to measure on one side and put some known masses on the other side. So initially, when there's no known mass to balance it, your instrument will deflect to one side, but you don't take the reading when the instrument is deflected. So what you do, you start putting some weight here until your instrument come back to the zero value, to the null value, until it shows null deflection, until there is no more deflection in the instrument. And at this point, you take the value of the known counterbalance of the known masses and say, okay, if this is 500 gram and it balances this unknown mass, okay, so this unknown mass value must be 500 gram. Clear, students? Deflection mode and null mode. सर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, समझ नहीं जी, क्वेश्चन पूछें. जिस जहाँ पे समझ नहीं है उसकी क्वेश्चन पूछें. सर आपने कहा ना कि डिफ्लेक्शन हुई तो हमने इसको फिर उसमें मास डाला ये कैलिब्रेशन करके, तो इस वेट बैलेंस की आप मिसाल दे रहे थे, तो इस वेट बैलेंस को अगर हम देख ले तो जब इसको हमने मास नहीं दिया था तो ये उस वक्त डिफ्लेक्शन मोड में था, और जब हमने इसमें किसी के कैलिब्रेट करके किसी इंस्ट्रूमेंट के अच्छा, स्टैंडर्ड एक बात जरा स्टेप वाइज. अभी हम ये दोनों इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है, ठीक है. अभी हम इनको यूज कर रहे हैं, इस वक्त हम कैलिब्रेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है. हम यूज कर रहे हैं, और यूज करते वक्त हर एक इंस्ट्रूमेंट दोनों मोड में यूज नहीं हो सकता. कुछ इंस्ट्रूमेंट दोनों मोड में यूज हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट सिर्फ नल मोड के फॉर्म में यूज होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन मोड की फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है. अब ये जो पहला वाला एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, ये वही वेट बैलेंस होता है. आप फुटपाथ पे चल रहे होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में वेट बैलेंस होता है मैकेनिकल. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आए हुए हैं, वो मैकेनिकल जिसके अंदर एक सुई होती है जो कि हिल जाती है अगर आप उस वेट बैलेंस के ऊपर खड़े हो जाते हैं. ये एक वो वाला सिस्टम है. और दूसरा सिस्टम आप लोगों सब लोगों ने देखा होगा, दुकानदारों के पास पड़ा होता है, ठीक है, जो कि आपको सौदा तोल के देते हैं, ठीक है, ये वाले सिस्टम. अब दोबारा कहें, अब क्वेश्चन पूछें. सर मेरा क्वेश्चन में ये दुकानदार के साथ जो बैलेंस होता है उसके बारे में है. अच्छा,
جی جی تو بالکل. اس میں آپ نے کہا تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس میں ڈیفلیکشن اور نل دونوں نہیں ہوتے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ جب اس میں یہ 500 گرام اسٹینڈرڈ ہم نہیں رکھا ہوتا ہے تو تب یہ ڈیفلیکٹ ہو کے نیچے چلا جاتا ڈفلیکٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس وقت دکاندار ریڈنگ نہیں لیتا نا. دکاندار ریڈنگ کب لیتا ہے اس ہے انسٹرومنٹ کی؟ جب نل موڈ میں آ جاتا ہے. جب وہ نل ویلیو پہ آ جاتا ہے یا نل ڈیفلیکشن پہ آ جاتا ہے تب ہم اس کی ریڈنگ لیتے ہیں. تو ہم اس طرح کے ڈیوائس کو ہم کہتے ہیں، یا اس طرح کے ٹائپ آف میئرمنٹ کو ہم کہتے ہیں نل میئرمنٹ. ٹھیک ہے، نل موڈ آف میئرمنٹ. اور تو سر جب پھر ہم کیا ہاں ہوتی ہے جی کون سی ڈیفلیکشن؟ سر پھر کیا ہوتی ہے وہ تو ڈفلیکشن؟ ایسی ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب یہ میکینیکل ویٹ بیلنس ہے نا، جب آپ اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے تو سوئی نل پوائنٹ پہ ہوتی ہے، زیرو پہ ہوتی ہے نا. لیکن جب آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، when you stand up on this device، ٹھیک ہے، تو یہ سوئی جو ہوتی ہے زیرو پوائنٹ سے ہل کے کسی ایک اور پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے، اور اس پوائنٹ کی ویلیو ہو سکتا ہے 80 kg ہو. ٹھیک ہے، تو آپ ریڈنگ اس وقت لیتے ہیں جبکہ نیڈل نل سے ڈیفلیکٹ ہو کے کسی اور ویلیو پہ چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے، now this measurement method is called deflection mode of measurement. اوکے سر ابھی سمجھ آ گئی. یعنی نل موڈ کے لیے زیرو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جب وہ بیلنس ہو جائے، جب جب آپ کا انسٹرومنٹ بیلنس ہو جائے. اور ٹھیک ہے، ڈیفلیکشن کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ زیرو سے چینج کرے گا اپنی ہاں یعنی زیرو سے اس کی جو نل میتھڈ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی اسکیل نہیں ہوتا، اس میں بس ایک درمیان میں زیرو لکھا ہوتا ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. جب آپ اس کے اوپر کوئی چیز ڈالیں گے، یعنی اگر یہی ڈیوائس ایسے ڈیزائن ہو کہ اس کو آپ نے نل موڈ میں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک زیرو پوائنٹ ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پوائنٹر مثال کے طور پہ یہاں پہ آ گیا، اس پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہوا کہ یہ کتنی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کریں کہ یس اس سر. کے اوپر آپ ماسز رکھیں گے، اتنا ماس رکھیں گے کہ وہ اس ویلیو تک. خیر یہ تھوڑی سی ایگزامپل تھوڑی غلط ہوگی. یہ ٹپیکلی چلیں میں لیٹ می ریپیٹ دیٹ. ٹپیکلی ہم یہ ڈی ایس این وال مومنٹ میں دونوں وہ اسٹڈی کریں گے. ٹپیکلی جب یہ ڈیفلیکٹ ہوگی تو اس کے اوپر کوئی اسکیل لکھا ہوگا، مثال کے طور پہ 80 kg. ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیفلیکشن کے وقت آپ نے اس انسٹرومنٹ کی ویلیو ریکارڈ کی ہے، اینڈ دیٹس وائی وی سے دیٹ دس انسٹرومنٹ ہیز بین یوزڈ ایز اے ان ڈیفلیکشن موڈ آف میئرمنٹ. ٹھیک ہے، آن دا ادر ہینڈ اس کیس میں ہم جب یہ انسٹرومنٹ ڈیفلیکٹ کرتا ہے تو اس وقت ہم ریڈنگ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، اس وقت ہم نہیں کہتے کہ آپ یہ اتنا وزن ہے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس ڈیفلیکشن کو ختم کر کے دوبارہ نل موڈ میں اس انسٹرومنٹ کو لاتے ہیں تاکہ یہ بالکل بیلنس ہو جائے، اور پھر ہم اس کی ریڈنگ لیتے ہیں. دس از کالڈ نل موڈ آف میئرمنٹ. تھوڑا سا ہم ذرا سا ایک منٹ، میرے خیال میں آگے تھوڑی سی اس کی اور ایکسپلینیشن ہے ان ٹرمز آف دس ڈی ایس این. جی ڈیفلیکشن اور نل موڈ جی سمجھ آ گئی سر. اچھا ٹھیک ہے. ابھی یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی what is the advantage and disadvantage of null mode and what are the advantages and disadvantage of deflection mode. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہم ڈسکس کریں گے تو it will become more ایکسکیوز می clear. جی کوشچن. سر، آواز لے کر رہی تھی سر. نل موڈ کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے پہلے نل اسٹیٹ میں لائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی میئرمنٹ جو ہے کنسیڈر کریں گے. جی 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 ایسے ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اچھا. Now, current devices, typically ہمارے پاس جو گیلوانومیٹر ہوتا ہے which uses DSN wall arrangement، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی پچھلے سلائیڈ میں ہم نے پڑھا ہے، is a measuring device used to detect current flow in a circuit. It is highly sensitive DSN wall moment calibrated about zero current. The indicator normally indicates zero but can deflect to the plus or minus. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ ٹپیکلی ہمارے پاس جو گیلوانومیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈی ایس این وال، مطلب آپ کے پاس ایک نیڈل ہوتے ہیں جو کہ زیرو پوائنٹ پہ کیلیبریٹ ہوتا ہے کہ دس از زیرو.
ठीक है। और इसके लेफ्ट और राइट पे मिसाल के तौर पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को कोई अननोन करंट देंगे तो ये नीडल या तो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी या राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होगी, डिपेंडिंग वेदर द करंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और यू कैन से डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है। नाउ a galvanometer has a very high sensitivity which is around 0.1 milliampere per division। ठीक है। अब इसके ऊपर मिसाल के तौर पे इस तरह के डिविजन्स हैं, लेकिन डिविजन्स के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यूज हो भी सकते हैं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। वैल्यू ना होने का मतलब यह है कि यू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट एज ए नल मोड ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। वैल्यू अगर ऊपर है, अगर यहाँ पे कैलिब्रेटेड है 10, 20, 30, देन यू कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट एज ए डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, थोड़ी देर में और भी एक्सप्लेन। लेट्स फर्स्ट रीड दिस स्लाइड। नाउ a galvanometer is a highly sensitive electric current measurement device with a sensitivity of 0.1 milliampere per division। sensitivity आप लोगों को याद है लास्ट टाइम calibration curve में sensitivity, हाँ, slope of a calibration curve। so when I say that galvanometer is a highly sensitive device, तो उसका क्या मतलब है कि इसकी जो calibration curve है उसके slope जो है बहुत high है, which means that for a small input there is significant deflection of the needle। That means that we can detect a very small current, so typical galvanometer sensitivity is approximately is around 0.1 milliampere per division. Now, DSN wall moment have certain errors associated with this mechanism. And those errors are hysteresis or repeatability error due to mechanical friction in the pointer bearing moment। इस बात की समझ आ रही है स्टूडेंट? किसी को इस शक? does somebody need further explanation? ठीक है। If I go to the previous slide, of course this point and this pivot point need to be supported in certain mechanical bearings, ठीक है, so that this needle or this this coil can rotate freely. But even though bearings are designed so that there is minimum resistance to the motion, still there will be some hysteresis and repeatability errors due to mechanical friction in the bearing of the pointer। Clear यहाँ तक students? Yes sir। ठीक है। Yes, sir. Second, the linearity error in the spring that provides the restoring force for equilibrium। So typically spring की equation आप लोग को याद है, spring force is equal to F is equal to kx। ठीक है। Now this is basically a linear equation because it is of the form of y is equal to mx plus c, where c is equal to 0. So this is basically spring. Typically we consider it as a linear device, but in reality actual spring might be, or typically they are non-linear. Even if they are linear for a certain range, beyond that range the spring is non-linear. So even though we assume it to be linear, there is some non-linearity present in the spring for the full range of spring। ठीक है, spring deflection। So this is the second error that can possibly be part of a DSN wall moment, DSN wall arrangement. The first one is hysteresis and repeatability error. The second one is non-linearity error or linearity error in the spring that provides restoring force for equilibrium। ठीक है, हम किस spring की बात कर रहे हैं? हम इस spring की बात करें। ठीक है। Next, third error. Also in developing torque, DSN wall moment must
extract energy from current flowing through it. This drain of energy from the signal being measured changes the measured signal, and such an effect is called loading error. कौन अब ये बात मुझे समझाएगा? This last bullet point. Who will explain that to me? जी स्टूडेंट. सर लोडिंग इफेक्ट सर यहाँ पे होती है. लोडिंग इफेक्ट्स होगी, लेकिन जरा एक्सप्लेन करके दे कैसे लोडिंग इफेक्ट होगी. चलिए मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, और दिस इज ए सर्किट, कुछ इस तरह का सर्किट. ठीक है, और मैं इन दो पॉइंट के दरमियान पॉइंट ए, या चलिए मैं इस सर्किट के अंदर करंट मेजर करता हूं. ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल. ठीक है, इस डायरेक्शन में हम जाते हैं. From positive potential to negative potential. ठीक है, if I'm measuring this current, ठीक है, and let's suppose so I attach my galvanometer here. एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट ये ले लेता हूँ, and I take these two wires and connect it to my galvanometer. ठीक है, so there is a current flow through the galvanometer. अब मुझे ये बताएं कि when this needle deflect, let's suppose in this direction, when this needle deflect, this deflection will occur against a restoring force, spring restoring force. उसके against ये needle deflection होगी ना. समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है, अब मुझे ये बात बताएं कि ये जो इस गैल्वानोमीटर या इस डियर्सन वॉल मोमेंट अरेंजमेंट में ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है, जो कि इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, ये फोर्स को एनर्जी कहां से मिली है? सर सर्किट करंट से. सर्किट करंट से मिली. तो अगर इसने सर्किट से कुछ करंट खुद खा ली है, if it has taken away some of the current in producing that deflection force, what does it mean? कि जो करंट हम मेजर कर रहे हैं सर्किट में, पहले वो करंट ज्यादा था, अब जो हम मेजर कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा तो फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स प्रोड्यूस करने में यूज हो गया. इज दैट ट्रू? यस सर. ठीक है, तो हम जो सर्किट के लिए जो अब करंट बाकी रह गए या जिसको हम मेजर करेंगे, वो करंट जो कि हम मेजर कर रहे हैं, हमारा मेजरमेंट करंट एक्चुअल करंट से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आवर मेजरमेंट करंट इज लेस देन एक्चुअल करंट? कैन आई से दैट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यस सर. क्योंकि उस करंट के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसका कुछ हिस्सा तो डियर्सन वॉल मोमेंट ने खुद यूज कर लिया है in the process of measurement, in the process of needle deflection. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर. इस इफेक्ट को हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने की वजह से उस इंस्ट्रूमेंट का लोड जो है उस सर्किट पे पड़ गया है, जिसके हम किसी वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं. उस लोड की वजह से वो वैल्यू डिटेरेट हो गई है, डिफॉर्म हो गई है. इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज द लोडिंग इफेक्ट, द एरर इंड्यूस्ड बाय द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इन द वैल्यू दैट वी वांट टू मेजर इज कॉल्ड लोडिंग एरर. ठीक है, ठीक है. और the phenomena when the measurement medium is disturbed in the process of measurement because of it's consuming energy, because of the measurement instrument consuming energy in the process of measurement itself, is called loading effect of the instrument for that measurement. यहाँ तक clear students?
यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को दो तीन बातें आज के लेक्चर में अभी तक हमने डिस्कस की हैं, नई बातें जो कि आपने एफएससी में नहीं पढ़ी जब आप गिलवानोमीटर स्टडी कर रहे थे या डियरसन वॉल मोमेंट स्टडी कर रहे थे. नंबर एक, Yes, sir. there are two types of measurement modes, null mode and deflection mode. और ये सिर्फ गिलवानोमीटर के लिए नहीं, जनरली स्पीकिंग for instruments can be designed either for null mode of measurement or they can be designed for deflection mode of measurement. So we can design a DSN wall moment based instrument either for null mode of measurement or for deflection mode of measurement. अब आप लोगों ने एफएससी में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं इस तरह के. देखें, आप लोगों ने एम मीटर यूज किया हुआ है ना स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोगों ने एम मीटर यूज किया है एफएससी में करंट इन अ सर्किट मालूम करने के लिए? यस सर, यूज किया है हमने। यूज सर किया, यूज किए। ठीक है. और एक आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एफएससी में है या मैट्रिक में, अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने का बाय जॉकिंग, उसका क्या नाम था उस एक्सपेरिमेंट का जिसमें आप एक अननोन रेजिस्टेंस मालूम करते हैं? वीटस्टोन ब्रिज था सर के? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है. और उसमें वो आप स्लाइड करते थे और आपको पता चलता था कि भाई तो उसमें आप गिलवानोमीटर यूज करते थे, उसमें आप डिफ्लेक्शन मोड नहीं, आप जीरो मोड यूज करते थे, याद है? यस सर, यस सर। ठीक है ना. आप इतनी वैल्यू चेंज के शुरू में जब आप अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे तो वो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो आप उस वक्त रीडिंग नहीं लेते थे. फिर आप उसमें रेजिस्टेंस को इतना चेंज करते थे कि वो नीडल दोबारा जीरो पे आ जाए. जब जीरो पे आ जाती थी तो जितना आपने रेजिस्टेंस चेंज किया था वो वैल्यू आप ले लेते कि भाई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है जो जितना कि मैंने इस रेजिस्टेंस को चेंज किया. ये एक्सपेरिमेंट आप सबको याद है? जी सर याद है। ठीक है. सो इवन दो आपने एफएससी में नल मोड ऑफ मेजरमेंट स्टडी किए हुआ है, लेकिन शायद आपको इस तरह से समझाया नहीं गया कि व्हाट इज नल मोड ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. फिर जो है अभी हमने एक और चीज पढ़ी है कि जो हमारे पास डीएरसन वॉल अरेंजमेंट है इसके अंदर मल्टीपल एरर्स हैं. ठीक है. और तीन एरर्स यहाँ पे नोट किए गए हैं स्पेसिफिकली. एक तो हमारे पास हिस्टरीसिस एंड रिपीटेबिलिटी एरर्स हैं, एक्चुअली दो एरर्स हैं लेकिन वी हैव पुट देम इन सिंगल बुलेट्स. फिर हमारे पास जो है लीनियरिटी एरर्स हैं जो कि स्प्रिंग नॉन लीनियरिटी की वजह से इंट्रोड्यूस होते हैं. और तीसरा जो है हमारे पास लोडिंग एरर है, और लोडिंग एरर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करके दे दी. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. सर ये बाज हमारे पास बैलेंस होते हैं या मीटर होते हैं, हम उसको देते हैं कि 1 kg काउंट करना है, तो वो जैसे 1 kg पूरा हो जाता है खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह हो गई ये चीज. हाँ, वो दे आर स्टिल डिफ्लेक्शन मोड, क्योंकि देखिए आप मेयर ठीक है, वो थोड़ी सी ऑटोमेशन है ना. ठीक है, इट इज ऑटोमेशन, बजाय इसके कि आप खुद एक बंदा उससे देखे कि भाई इतना पेट्रोल चला गया और जब वो 10 लीटर टारगेट तक पहुंच जाए तो बंदा उससे स्टॉप करे. तो उस कंप्यूटर के अंदर खुद ऐसा सर्किट, ऐसी कमांड्स मौजूद होती है जो कि कंटिन्यूसली चेक करता है कि भाई क्या ये कंट्रोल का प्रॉब्लम है कि क्या जो टारगेट है वो अचीव हो गया या नहीं हो गया. जब तक टारगेट अचीव नहीं होता पंप चलता रहता है, जब टारगेट अचीव हो जाता है तो पंप स्टॉप हो जाता है. सो इट इज ए फीडबैक कंट्रोल लूप एक चल रहा है. ठीक है. सो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट है या नल मोड ऑफ मेजरमेंट है या कोई तीसरा मोड ऑफ मेजरमेंट है, सो आंसर टू दैट इज दैट इट इज बेसिकली अ डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, क्योंकि जीरो पे आप मेजरमेंट नहीं ले रहे, आप 10 पे ले रहे हैं, बट इट इज ऑटोमेटेड थ्रू ए फीडबैक कंट्रोल लूप. ठीक है. यस सर. अच्छा, सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा, एमीटर और उसमें क्या फर्क है गिलवानोमीटर में स्टूडेंट्स? सर सेंसिटिविटी का फर्क है सर. अच्छा, बिल्कुल सही है. देखिए, गिलवानोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है,
اور سینسٹیو انسٹرومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فیو ٹینس آف اے ملی ایمپیئر کرنٹ پرووائڈ کریں گے تو اس کی ڈیفلیکشن میکسیمم لمٹ تک پہنچ جائے گی. اگر اس سے زیادہ آپ کرنٹ پرووائڈ کریں گے تو وہ اتنا سینسٹیو انسٹرومنٹ ہے کہ وہ انسٹرومنٹ پروبیبلی جل جائے گا. ٹھیک ہے, گلوانومیٹر کے جلنے کا خطرہ ہوگا. اب ہمارے جو ریئل ورلڈ سیناریوز ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ہمیں بہت کم کرنٹ میئر کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل کیلکولیٹر کے اندر کتنا کرنٹ کنزیوم ہو رہا ہے. اب دس از ویری 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 لو کرنٹ. آپ کی گھڑی الیکٹریکل, آپ کی جو الیکٹرانک گھڑی ہوتی ہے وہ کتنا کرنٹ کنزیوم کرے. ناؤ دس از ویری ویری اسمال کرنٹ. ٹھیک ہے, ایون ملی ایمپیئر سے بھی کم, بہت کم. ٹھیک ہے, پاسبلی. But then you also have to deal with situation جہاں پہ آپ نے ملی ایمپیئر کے بجائے ایمپیئرز, جیسے اب آپ کا آج کا اسپلٹ اے سی ہوتا ہے. So it is good few ایمپیئر, 3 4 5 ایمپیئر سے اسٹارٹ ہو کے 8 9 10 ایمپیئر تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن دا کیپیسٹی آف دا air conditioning unit. And if it is a large commercial or industrial air conditioning unit, یا ایک بہت بڑی بلڈنگ کا ایئر کنڈیشننگ یونٹ ہے, then it can be many hundreds of amperes, maybe even thousands of amperes. اگر آپ الیکٹرک گرڈ کی بات کر رہے ہیں so it's even more. ٹھیک ہے, so آپ کے پاس بہت ہائی رینج بھی ہوتی ہے کرنٹ کی. اب اسمال کرنٹس کو تو آپ گلوانو میٹر سے میئر کر سکتے ہیں. تو ہائی رینج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہائی رینج کے لیے ہم شنٹ ریزسٹنسز کنیکٹ کر دیتے ہیں, which are basically low resistances. ٹھیک ہے, which are basically low resistances in parallel to the galvanometer. تو اگر آپ کے پاس یہ low resistance ہے اور یہ high resistance ہے, ٹھیک ہے, so اور دونوں, اور کرنٹ فلو ہونا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کرنٹ فلوز ان دس ڈائریکشن. اب مجھے بتائیں کہ ظاہر یہ کرنٹ اب ڈسٹریبیوٹ ہوگی. ٹھیک ہے, this current will distribute in two paths. There are two paths. One of the path is this one, the other path is through the galvanometer. ٹھیک ہے, اب اگر galvanometer کا resistance relatively زیادہ ہے compared to this resistance R2, تو زیادہ کرنٹ کس پاتھ میں سے گزرے گا, galvanometer کے پاتھ میں سے گزرے گا یا R2 کے پاتھ میں سے گزرے گا؟ اسٹوڈنٹس R2 سے. کیوں R2 سر. کیوں, what is the reason? R2 کم ہے, یہ ریزسٹنس کم ہے. Because current always prefer a low resistance path. ٹھیک ہے, سو کچھ ظاہر کچھ گزرے گا گلوانومیٹر میں سے, لیکن زیادہ تر کرنٹ جو ہے لو ریزسٹنس, ڈیپینڈنگ کہ دونوں کے ریزسٹنس میں فرق کتنا ہے. اگر فرق 10 ٹائمز ہے تو 10 ٹائمز مور کرنٹ جو ہے وہ لو ریزسٹنس میں گزرے گا, اور 1/10 جو ہے وہ گلوانومیٹر میں سے گزرے گا. سو دیٹس ہاؤ وی ڈیزائن این ایم میٹر. ایم میٹر کیا ہوتا ہے, وہ بیسیکلی ڈیئرسن وال مومنٹ جو کہ کیلیبریٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اسکیل ہوتا ہے, اور اس ڈیئرسن وال مومنٹ کے پیرلل میں ہم جو ہے ویری لو ریزسٹنس, ملٹیپل ریزسٹنس لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی مدد سے ہم جو ہے جب ہم میٹر کنیکٹ کرتے ہیں کسی سرکٹ میں کرنٹ میئر کرنے کے لیے, تو زیادہ تر کرنٹ جو ہے وہ شنٹ ریزسٹنس میں سے گزر جاتا ہے, اور کرنٹ کا کچھ حصہ جو ہے گلوانومیٹر میں سے گزر جاتا ہے. جو کچھ حصہ گلوانومیٹر میں سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ گلوانومیٹر کی نیڈل کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے, اور اس نیڈل کے ساتھ اسکیل لگا ہوتا ہے, کیلیبریٹڈ اسکیل. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا کرنٹ پاس ہو رہا ہے گلوانومیٹر میں سے, کیونکہ ہمیں گلوانومیٹر کی ریزسٹنس اور شنٹ ریزسٹنس کی ریشو پتہ ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر گلوانومیٹر میں سے اتنا کرنٹ پاس ہو رہا ہے تو ٹوٹل سرکٹ میں سے کتنا کرنٹ پاس ہو رہا ہے. یہاں تک کلیئر اسٹوڈنٹس؟ یس سر. یس سر. یس سر. کیونکہ اگر ریزسٹنس کی ریشوز ہمیں پتہ ہے, سو اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ فار ایگزامپل اگر مجھے پتہ ہو کہ گلوانومیٹر کا ریزسٹنس مثال کے طور پہ 1 اوہم ہے, اور یا لیٹ سپوز میں رف ویلیوز لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہ دیز آر ناٹ پرابلی ٹرو ویلیوز. ٹھیک ہے, اور چلیے میں 10 اوہم لے لیتا ہوں, اور R2 جو ہے 1 اوہم ہے. ٹھیک ہے,
तो अगर आपको पता है कि गैल्वानोमीटर जो है वो डिटेक्ट कर रहा है कि गैल्वानोमीटर में से 1 एम्पेयर करंट या लेट सपोज 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है, तो टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ होगा। ठीक है, आप क्या ये कैलकुलेशन कर सकते हैं? मतलब अगर मैं आपको ये इस तरह का सर्किट बना के दे दूं कि भाई देयर इज वन रेजिस्टेंस व्हिच इज 10 ओम और देयर इज another resistance which is let's suppose 1 ohm, और यहां पर एक अननोन करंट है, ठीक है, I अननोन, और यहां पर जो करंट पास हो रहा है, यहां पर जो करंट पास हो रहा है दैट इज IG। ठीक है, इफ आई से कि IG इज नोन, मिसाल के तौर पे IG जो है 10 मिली एम्पेयर है, कैन यू सॉल्व दिस करंट फॉर IU मालूम करने के लिए आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये रेजिस्टेंस भी पता है, ये रेजिस्टेंस भी पता है, और आपको करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस भी पता है, if you Yes, know sir. this value, can you solve this circuit for Yes, sir. IU unknown current के Sir, लिए आप सॉल्व कर सकते हैं? yes, sir. इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है दोनों के बराबर है, उसको बराबर लेंगे हाँ, ठीक है, तो इससे फिर मालूम करेंगे। इससे मालूम कर। That's how we convert a highly sensitive DSN wall moment calibrated from from a low current measurement instrument to a high current measurement instrument. ठीक है, any question? Should I move forward, students? यस सर। नहीं है कुछ। ठीक है, चलो। अच्छा, now there is a AC current and there is DC current. आप सब लोगों को ये तो पता है ना? All of you know what's an AC current, what's a DC current. So this is a DC current. So this is time and this is voltage या even current. ठीक है, चलिए current हम ले लेते। So DC current typically has a constant value. It may fluctuate a little bit, but it doesn't cross the zero line. Okay? Its polarity doesn't change. This is called a DC current. On the other hand, an AC current is something whose magnitude changes and its polarity also changes. Polarity का मतलब ये है कि when this current goes in the negative, now this is positive current and this is negative side of the vertical axis. So initially the current is moving in one direction and it's moving in positive direction and its magnitude keeps on increasing, but it's still positive, keeps on decreasing, and it's positive until it reaches this point. From this point, the direction of the current changes and its magnitude increases. ठीक है? अच्छा, यस ठीक है। So in the circuit, what is happening? ठीक है, in the circuit, a alternating current, AC current. How does AC current work? Initially, this is the direction. When the direction is positive, when you are here, the current is moving in this direction as per this arrow. ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड कम और ज्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन दिस प्रोफाइल। ठीक है, as the graph moves into this region, the current direction reverses. Now the current is moving in this direction and its magnitude increases and decreases as per this profile. समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, on the other end, a DC current will always move in one direction. When we say that the polarity changes का मतलब ये है कि direction of current changes. Polarity change का मतलब ये है कि जो आपके पास potential point है, उनकी जो relative relationship है वो reverse हो गई है। पहले जो बड़ा था अब वो कम
पोटेंशियल हो गया, जो कम पोटेंशियल था वो हाई पोटेंशियल हो गया। तो इसके मतलब है कि फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स होगी। दैट्स व्हाट्स वी कॉल पोलैरिटी रिवर्सल या पोलैरिटी चेंज। ठीक है। So now we know what is what is direct current and what is alternating current. किसी को क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, चलें। नाउ अब तक जो हमने डियर्सन वॉल मोमेंट पढ़ा है, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, एक मिनट में जरा ये प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूं क्योंकि वो गायब हो गए। डिस्कार्ड, एक मिनट जरा मुझे दे दे। What just happened? अच्छा, अच्छा मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। Hopefully it is fine now. So up till now we were studying Dierson wall moment. We were studying Dierson wall moment for measurement of direct current. ठीक है? So what we do, we provide current to this coil, and it is a direct current. So because of direct current, because the direction of the current doesn't changes, the polarity doesn't changes, only the magnitude of the current may be small or large, and we measure the magnitude of the current using Dierson wall mechanism. But if I need to measure the magnitude of alternating current, if I need to measure the magnitude of an alternating current, in this case, the polarity of the current changes continuously. For example, the electric current, AC current in our homes in Pakistan has a frequency of 50 hertz. Wakas, aap khair thoda apna mic mute kar dein. So it has a frequency of 50 hertz. That means that the polarity of electricity provided by WAPDA in Pakistan, it changes 50 times every second. Okay? So if I want to measure this type of current, an alternating current magnitude, with a galvanometer or a simple ampere meter, DC ampere meter, what will happen to this needle? Because the polarity continuously changes, so this needle will not deflect and stay at its deflected value. Rather, it will try to oscillate, if it can, at the frequency of the alternating current, which will make it pretty much impossible for us to know the value of the magnitude of our alternating current. Do you see the problem here, students? Yes, sir. Okay. So how do we solve this problem? So there are a few ways. So for that, in this slide, we are discussing how to measure. अब तक हमने जितनी current measurement devices पढ़े, ammeter या galvanometer, they are used for DC current measurement. Right now, we have a problem. The problem is, how do we measure AC current? And for that, we can use either AC current. AC current can be measured through several different methods. Number one, what we can do is we can take a DC meter. We can take a DC meter, either a galvanometer or an ammeter, and we can connect this DC meter to an AC source, not directly, but first passing this AC source through a bridge rectifier.
that will convert this AC source into DC. So it will convert AC into DC, and the magnitude of DC signal will be proportional to the AC signal, and from there we can measure the value of the DC current through the meter. But this DC value is actually value of the AC current, alternating current. इस बात की समझ आ रही? Let me read it. In common deflection meter uses diode from a rectifier to convert the time dependent AC current into DC equivalent current. This current then can be measured with a calibrated D'Arsonval moment meter. Clear है यहाँ तक students? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. The second method is an electrodynamometer. Okay, so it's the name of a device, and the name of the device is electrodynamometer. Is basically a D'Arsonval moment modified for use to measure AC current by replacing the permanent magnet with electromagnets in series with the current coil. ठीक है, इस बात की समझ आ रही है? अगर हम D'Arsonval moment पे चले जाएं तो हमारे ये जो permanent magnets हैं, north and south pole, they are replaced by electrical coils. So when the current now, and the measurement current now first passes through this coil, or means that the circuit, these two coils, the north and south pole coil or the magnetic coils, are in series with the measurement loops coil. Okay, so these AC meters, AC current by replacing the permanent magnet with electromagnets in series with the current coil, these AC meter have upper limit. This, once you do that, then you can measure. Then when you apply an alternating current to this device, which is now called electrodynamometer. An electrodynamometer is nothing more than a D'Arsonval moment device, but in this device, the permanent magnets are replaced with electromagnets, which means electromagnet circuit, and these circuits are electrically connected in series with the loop current coils. Okay, with the loop coils. Now this device can now measure AC current, because when you pass AC current through this device, its needle will simply deflect corresponding to the magnitude of AC current. It will not keep on oscillating. ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, सर sir. ये सर कि मतलब ये किस तरह oscillate नहीं होगा और सर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है ना. जरा सोचें, think about it, that since now, पहले क्या था कि परमानेंट मैग्नेट्स थे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट थी, एक डायरेक्शन में थी ना. ठीक है, so north pole was permanently north pole, south pole was permanently south pole. ठीक है, now if you provide, अब अगर आप इन परमानेंट मैग्नेट्स को रिप्लेस कर देते हैं विद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सर्किट्स, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट को आप एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, तो करंट की जब डायरेक्शन चेंज होगी तो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो भी चेंज होंगे. मतलब जब करंट की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी तो मिसाल के तौर पे राइट साइड वाला मैग्नेट जो है वो नॉर्थ पोल है, लेफ्ट वाला जो है साउथ पोल है. लेकिन जब करंट की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी तो जो राइट साइड वाला है वो साउथ पोल हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाला जो है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस योर नीडल विल basically the effect of polarity will be negated, क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन उसमें रिवर्स होगी, क्या कहते हैं करंट मेजरमेंट कॉइल में, तो एट द सेम टाइम आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी. सो इवेंचुअली बोथ ऑफ दोज रिवर्सल विल कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट. क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, now these kind of instruments
have one problem, that they can work for currents of certain frequency. So for example, एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आप उठाएंगे, मिसाल के तौर पे वार्डा के पास पड़े हुए, उनकी लैब में आप जाएंगे, उनके पास एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पड़ा होगा, उस इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पे लिखा होगा, उसकी बैग पे या उसकी स्पेसिफिकेशन शीट पे लिखा होगा कि दिस वर्क्स ओनली फ्रॉम 40 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज के सर्किट को, ये यानी 40 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी से लेके 60 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, अदरवाइज ये मेजर नहीं कर सकता. ठीक है. नाउ दिस पुट्स ए लिमिटेशन on the electrodynamometer use, क्योंकि एक मतलब दिस इज नॉट यूनिवर्सल कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट आप मेजर कर सकते. ना सिर्फ आपने अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड की रेंज को अंदाजा लगाना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड होगा तो जाहिर है पॉसिबिलिटी कि वो डिवाइस जल जाएगा. बट एट द सेम टाइम आपने इस बात का भी अंदाजा लगाना है कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी उस इंस्ट्रूमेंट की गिवन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर होनी चाहिए. अदरवाइज you should not use that instrument. You should use a different electrodynamometer which can measure that different frequency alternating current. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? सर स्टैंडर्ड लाइन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक रेंज में सर काम करेगा, मतलब कि मेजरमेंट करेगा. हाँ, मतलब है कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट आप वहां पे यूज करें, अगर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है मिसाल के तौर पे 10 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक है, अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट लेंगे, किसी ऐसे सिग्नल को मेजर करने की कोशिश करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज होगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको एक्यूरेट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेगा. सही. ठीक है. Okay, for an accurate third, so right now we studied two methods of AC current measurement. One is using a rectifier circuit to convert AC current into DC current, and then using a DC current measurement device to measure the value of the current. Second one is to use electrodynamometer. Third one is to use a Hall effect probe. In common language, they are called clamp meters. Okay, so let me show you what a clamp meter looks like. So let me get a picture of it and then share my screen with you. Okay. Can you see it? Clamp meter आपको नजर आ रहा है? यस सर. Yes, sir. This is a clamp meter. So if मेरे जो माउस का पॉइंटर है वो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है? Yes, sir. This is the clamp. और अगर आप यहां पर देखें, this opens up. ठीक है? If you press this lever, ठीक है, so this, ये जो लूप है ये ओपन हो जाता है और आप इसमें से वायर गुजार लेते हैं. ठीक है? So this is basically a non-contact probe. This is a non-contact probe, and it uses a phenomena, Hall effect phenomena. ठीक है? When a current is placed inside, when a conductor carrying current is placed inside this clamp, ठीक है, इस clamp के अंदर place कर दिया जाता है, then it can tell you how much current is passing through this conductor. And how does it tells you that? How does it measures it? It's because every current carrying conductor produces क्या produce करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को आप दोबारा पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. हाँ,
ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, چینجنگ میگنیٹک فیلڈ میں کنورٹ کریں گے تو آپ کا اے سی کرنٹ جو ہوگا وہ چینجنگ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرے گا یا فکس میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرے گا؟ چینج ان میگنیٹک فیلڈ سر. اور اس چینجنگ میگنیٹک فیلڈ کی میگنیچیوڈ کس چیز کو کورسپونڈ کرے گی؟ کرنٹ کو, کس چیز کو؟ ای ایم ایف وولٹیج سر. ای ایم ایف وولٹیج کو. ٹھیک ہے, لیکن اگر زیادہ کرنٹ پاس ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اور کم کرنٹ پاس ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میگنیٹک فیلڈ پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ آپ لوگوں نے ٹرانسفارمر میں پرائمری اور سیکنڈری سرکٹس پڑھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس؟ یس سر. ٹھیک ہے, اگر پرائمری سرکٹ میں کوئی کرنٹ پاس ہو رہا ہے تو سیکنڈری سرکٹ میں اس کرنٹ کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سر وہ نمبر آف کوائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں, نمبر آف چلے اگر نمبر آف ٹرنز سیم ہے, ٹھیک ہے, تو اگر پرائمری کرنٹ کم ہوگا تو سیکنڈری کرنٹ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ وہ بھی کم ہوگا سر. اور اگر پرائمری کرنٹ زیادہ ہوگا تو سیکنڈری کرنٹ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے یس سر. کہ آپ کا سیکنڈری کرنٹ جو ہے وہ کس چیز کے پروپورشنل ہوگے؟ پرائمری کرنٹ کے پروپورشنل ہے نا, ڈیپینڈنگ آن نمبر آف ٹرنز کے پہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کلیمپ میٹر, امیجن دا کنڈکٹر ان سائڈ دا کلیمپ میٹر از یور پرائمری کوئل, ٹھیک ہے, وچ پروڈیوسز اے ویئرنگ میگنیٹک فیلڈ, ٹھیک ہے, اور دا کنڈکٹرز ان سائڈ دس کلیمپ, ٹھیک ہے, وہ آپ کی سیکنڈری کوئل ہے. تو اب سیکنڈری کوئل جو کرنٹ ڈیٹیکٹ کرے گا کیا وہ پروپورشنل ہوگا کرنٹ پاسنگ ان دا کنڈکٹر؟ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی اسٹوڈنٹس کوشچن پوچھ لیں اگر سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی ہے سر. سمجھ آ رہی؟ میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں, ایک کنڈکٹر ہے جو کہ اس کلیمپ کے اندر میں, اس کلیمپ کے درمیان میں سے گزر رہا ہے, اور اس کنڈکٹر کے اندر جو ہے اے سی کرنٹ فلو ہو رہا ہے. جب اے سی کرنٹ فلو ہو رہا ہے, ٹریٹ دیٹ کنڈکٹر ایز پرائمری کوئل آف اے ٹرانسفارمر. اور یہ جو کلیمپ ہے اس کے اندر جو ہے ٹریٹ دس ایز اے سیکنڈری کوئل آف اے ٹرانسفارمر. ٹھیک ہے, تو اگر پرائمری کوئل میں سے کرنٹ فلو ہوگا, ٹھیک ہے, تو سیکنڈری کوئل جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا. اگر ویریبل کرنٹ, الٹرنیٹنگ کرنٹ فلو ہوگا تو سیکنڈری کوئل اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا, اور وہ سیکنڈری کوئل ڈیٹیکٹ کر کے اس کے اندر سرکٹ ہوگا, اس کی بیسس پہ وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ پرائمری کوئل میں کتنا کرنٹ فلو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے نان کانٹیکٹ ٹائپ آف انسٹرومنٹ. یہاں تک کلیئر ہے؟ شوڈ آئی گو بیک ٹو دا لیکچرس؟ یس سر. یس سر. ٹھیک ہے, سو let me go back. Okay, and ٹھیک ہے, ہال افیکٹ انسٹرومنٹ. نیکسٹ, اینالاگ وولٹیج ڈیوائسز. ٹھیک ہے, ڈی سی وولٹیج میئرمنٹ, اے سی وولٹیج میئرمنٹ. ابھی تک ہم صرف کرنٹ میئرمنٹ ڈسکس کریں. کرنٹ میئرمنٹ میں ہم نے کون کون سے ڈیوائسز ڈسکس کیے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے ڈی سی کرنٹ میئرمنٹ ڈیوائسز ڈسکس کیے ہیں, جس میں ہمارے پاس جو ہے ڈی ایس این وال مومنٹ یا سمپلی ایک گلوانو میٹر اور ایم میٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے. ایم میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک سمپل گلوانو میٹر ہے, اس کے پیرلل میں ہم کرنٹ ریزسٹنس لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ
جبکہ اے سی کرنٹ میئرمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 سیپریٹ میتھڈس ہیں. ریکٹیفائر میتھڈ ہے, الیکٹرو ڈائنامومیٹر یوز کر سکتے ہیں, یا ہم جو ہے ہال ایفیکٹ بیس انسٹرومنٹ یوز کر سکتے ہیں. اب ہماری پاس ہم نے کرنٹ میئرمنٹ اسٹڈی کر لیا, اب ہم وولٹیج میئرمنٹ کی بات کرتے ہیں. وولٹیج میئرمنٹ میں ہمارے پاس ڈی سی وولٹیج بھی ہے اور اے سی وولٹیج بھی ہے. ٹھیک ہے, ڈی سی وولٹیج میئر کرنا بہت سمپل سرکٹ ہے. آپ وہی ڈیئرسن وال مومنٹ انسٹرومنٹ لیں اور اس کے سیریز میں, ٹھیک ہے, ایک جو ہے آپ ریزسٹنس لگا لیں, اس کے سیریز میں آپ ریزسٹنس لگا لیں. ٹھیک ہے, اب یہ والا سرکٹ آپ کا بیسیکلی یہ سرکٹ بن جائے گا جو میں آپ کے سامنے ڈرا کر رہا ہوں. سر آپ نے سر دو پریزنٹیشن ٹیپ لگائے ہیں, ایک وہ اچھا, ہال ایفیکٹ پروب والا اور اب یہ پاور پوائنٹ والا. اب آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہی ہے؟ جی سر ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, صحیح. سو اگر میرے پاس یہ میرے پاس آر جی ہے, گلوانومیٹر ریزسٹنس ہے, یہ میرے پاس R1 ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ان نون وولٹیج ہے جو کہ میں میئر کرنا چاہتا ہوں. دس از وی ان نون جو کہ میں میئر کرنا چاہتا ہوں. اور فار ایگزامپل مجھے گلوانومیٹر آئی جی معلوم کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اف یو نو آئی جی ویلو, یو نو آر جی ویلو, یو نو R1 ویلو, کین یو فائنڈ وی ان نون ویلو اسٹوڈینٹس؟ یس سر. کیوں؟ سمپل ہے نا, کیونکہ یہ دونوں ریزسٹنس تو سیریز میں, سو سیم یس کرنٹ سر. آئی جی ول پاس تھرو بوتھ دا ریزسٹنسز. ٹھیک ہے, اور ان دونوں یس سر. ریزسٹنسز کو آپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس آر ٹوٹل آ جائے گا, اور آپ کے پاس کرنٹ بھی آئی جی موجود. سے ملٹیپلائی کر. ہاں, آر جی سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس وی یو آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب کوشچن یہ آتا ہے کہ سر ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ درمیان میں R1 کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو ہم ڈائریکٹلی بھی ہم وی ان نون معلوم کر سکتے تھے, ڈائریکٹلی بھی معلوم کر سکتے تھے وداؤٹ یوزنگ R1. ٹھیک ہے, بھی معلوم کر سکتے. واٹ از دا ریزن اسٹوڈینٹس, کیا ریزن ہے؟ سر زیادہ وولٹیج کے لیے کر رہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں ہم یہ جو یہاں پر سیریز میں ایک لارج ریزسٹنس لگاتے ہیں نا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کرنٹ فلو کو کم کر دیں, کیونکہ ہمارا جو گلوانومیٹر ہے یہ بہت سینسٹیو انسٹرومنٹ ہے, یہ کرنٹ کو میئر کر سکتا ہے. اگر ہم اس میں بہت زیادہ کرنٹ پاس کریں گے, سو دیر از اے گڈ پاسبلٹی کہ ہم گلوانومیٹر کو ڈیمیج کر دیں گے, اس کے سرکٹ کو جلا دیں گے. ٹھیک ہے, سو ٹو limit the current passing through the galvanometer, we use a high resistance in series with the galvanometer. ٹھیک ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم نے کتنے ہائی وولٹیج میئر کرنا ہے. جتنی ہم نے ہائی وولٹیج میئر کریں گے اتنا ہی ہم ہائر ریزسٹنس ان سیریز لگائیں گے. ٹھیک ہے, جتنا ہم کم وولٹیج میئر کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی ہم کم ویلیو کا ریزسٹنس ان سیریز میں لگائیں گے. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ یس سر. یس سر. یس سر. ٹھیک ہے, سو ڈی سی وولٹیج میئرمنٹ از جسٹ دیٹ سمپل. ہاؤ ڈو وی میئر اے سی وولٹیج؟ ٹھیک ہے, ناؤ اے سی وولٹیج سب سے پہلے before we study AC voltage, how do we measure AC voltage? We need to discuss what do we mean by AC voltage. AC voltage کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل اب سب کو پتہ ہے کہ واٹر کی بجلی جو ہے وہ AC وولٹیج ہے, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا؟ یس سر. ٹھیک ہے, اب میں ایک ویو فارم پلاٹ کرتا ہوں, یہ ویو فارم ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ واٹر کی بجلی نامنل 220 وولٹ ہے,
220 वोल्ट बिजली होती है ना, नॉमिनल वैल्यू, Yes, sir. एक्चुअली थोड़ी ज्यादा कम Yes. होती है, ठीक है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू 220 वोल्ट है। अब कोई मुझे बता सकते हैं कि इस ग्राफ में 220 किस चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? किसी को पता है स्टूडेंट? कोई मुझे बता सकते हैं 220 वोल्ट किस चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? एनीवन, कोई भी तुक्का लेकर आए। Sir, maximum amplitude. ये होते हैं सर। अच्छा ठीक है, मेरा भी जब मुझे नहीं पता था, मैंने भी पहले यही कहा था कि भाई 220 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म, सो प्लस 220 वोल्ट और माइनस 220 वोल्ट इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। बट दिस इज रॉन्ग, तो ये गलत है। किसी और को कुछ पता है स्टूडेंट? सर मैक्सिमम तकरीबन 236 होता है, उसके दरमियान सर हम एक वैल्यू लेते हैं सर, मिड से भी थोड़ी ऊपर से वो 220 होती है सर। तो ये तो बड़ी हवा वाली बात है, थोड़ी और एक्सप्लेन करें कि ये क्या कोई प्रोसीजर होगा ना कि जो हम ये 220 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, हम अंदाजे से तो नहीं कह सकते। आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे। सर अभी तो मुझे स्पेसिफिक इस तरह याद नहीं है, लेकिन सर इस 220 वैल्यू को हम कुछ और नाम लेते हैं सर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सर जी ये बिल्कुल। ग्राफ जो हमारे पास है ये रूट मीन ये स्क्वायर साइन वैल्यू। हाँ ये किसने कहा? बिल्कुल जी। रूट सर ये ग्राफ साइन का कर्व है ना, तो उसी के साथ हम फिर ये फ्रीक्वेंसी वगैरह मल्टीप्लाई करते हैं, वो वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बात भी थोड़ी हद तक ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट ने नाम लिया था रूट आरएमएस सर। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस RMS, ठीक है। किसी को पता है कि व्हाट इज RMS? सो RMS वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज 220 RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो वी से दैट VRMS for WAPDA is 220 volt nominal, ठीक है। Now what is RMS value? सर हम मेन वैल्यू लेते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका रूट लेते हैं, तो वो आरएमएस होता है सर। ठीक है, ठीक है, अच्छा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको कंसेप्चुअली आप कैसे समझेंगे कि व्हाट इज RMS वैल्यू? सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। देखिए, अगर मैं एक, आप सब लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटर तो देखे होंगे ना, इलेक्ट्रिक हीटर स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो यस सर। इलेक्ट्रिक हीटर का तो बहुत सिंपल सा एक सर्किट है, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं कुछ वी अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर, वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं, और यहां पर इससे कुछ हीट जनरेट होती है, ठीक है, Q जनरेट हुई, ठीक है, लेट्स कॉल इट Q1, ठीक है। नाउ इस अल्टरनेटिंग करंट को मैं रिप्लेस करता हूं, इस अल्टरनेटिंग करंट को मैं रिप्लेस करता हूं डीसी करंट से, और इस डीसी करंट की वैल्यू मैं उस हद तक बढ़ाता हूं कि दैट Q becomes equal to Q1. So this V alternating, so this VDC, हम कहते हैं कि this VDC which has the same, which carries the same amount of electric energy or same amount of electric energy through a resistive circuit is called VRMS of AC. अब समझ आ रही है इस बात की? यस Yes, सर। sir. Yes. ठीक है, तो देखें ये बेसिकली VRMS is the DC equivalent value of a alternating current और alternating voltage, ठीक है। अब समझ आ रही? Okay, sir. सो हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि
this is RMS value of this electric AC voltage, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की ये RMS वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक रेजिस्टिव सर्किट में कितनी हीट एनर्जी जनरेट करेगा, उतनी हीट एनर्जी हम कितने इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज से जनरेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि दिस इज सेम रेजिस्टिव सर्किट्स में से, तो हम कहते हैं कि ये उसकी RMS वैल्यू। दिस इज हाउ यू लॉजिकली अंडरस्टैंड इट। मैथमेटिकली बात सिंपल है, ठीक है। मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर है, RMS, रूट मीन स्क्वायर, RMS। इन तमाम फार्मूले में आप उल्टा जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप स्क्वायर लेते हैं इस सिग्नल का। तो ये सिग्नल जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये तो इस तरह से हो जाएगा, जबकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो भी इस तरह से हो जाएगा। पॉजिटिव तो इसी तरह से होगा, नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा, पॉजिटिव भी इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब ये वाला सिग्नल खत्म हो गया, ठीक है। फिर आप इस ये जो तमाम पॉजिटिव स्क्वायर्स हैं, इसकी आप मीन वैल्यू ले लेंगे, यानी टोटल मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ टाइम। मीन वैल्यू ले लेंगे, जब मीन वैल्यू आ जाएगी उसके बाद जो है आप इस मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। दिस वैल्यू विल नाउ बी कॉल्ड एज VRMS। नाउ दिस वैल्यू इज VRMS ऑफ दिस सिग्नल। समझा रही है इस बात की? यस सर। यस सर। अच्छा, जब हम कहते हैं कि मैंने एक वोल्ट मीटर लिया और मैंने वापडा की बिजली मुहैया की एंड इट केम आउट टू बी 220 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज की RMS वैल्यू मेजर की है, ठीक है। इसका मतलब ये है रियलिटी में, क्योंकि देखें जब आप कहते हैं 220 वोल्ट तो वापडा की बिजली तो कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रही है ना, उसकी वैल्यू तो फिक्स नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। लेकिन आप तो मुझे एक फिक्स वैल्यू बता रहे हैं। नाउ दिस फिक्स वैल्यू is nothing but the RMS equivalent of the alternating voltage, ठीक है। Now how do you measure it? आपके पास जो सर्किट है, how do they measure this value? They measure it by performing RMS calculation for an alternating voltage, ठीक है। And here you have two types of AC voltmeters. One of the type is called true RMS value, and the other one is called simple the first one is called true RMS voltmeter. The other one is called just a AC voltmeter. ठीक है, typically one is better than the other. A true RMS voltmeter is better than a non-true RMS voltmeter. क्यों? क्योंकि देखिए जो true RMS voltmeter है, it performs the actual calculation on the waveform, ठीक है। वेवफॉर्म के ऊपर एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, मतलब है उसको स्क्वायर करता है, उसका मीन लेता है और उसका रूट लेता है, ठीक है। क्योंकि इसे कंटिन्यूसली चेंजिंग सिग्नल, सो इट हैज टू टेक एरिया अंडर द कर्व, और फिर मतलब इट डू द होल प्रोसेस जैसे आप करेंगे। अगर आपको मैं एक सिग्नल दे दूं, यू परफॉर्म द होल RMS प्रोसीजर ऑन दैट सिग्नल, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन करना है, आपने उसको मीन लेना है, स्क्वायर लेना है, इंटीग्रेशन करना है वगैरह, वो सारे काम आपने करने। So a true RMS meter does all the process, ठीक है। A non-true RMS meter assume that your signal is a pure sine wave signal, और उसके पास एक simple formula है pure sine wave signal का, which I believe, एक मिनट जरा मुझे एक मिनट दे दें। So a true RMS
So that is Vrms is equal to 0.707 of V peak. ठीक है? अगर एक आपके पास एक साइन वेव है, प्योर साइन वेव है, प्योर साइन वेव का मतलब ये है कि उसकी फॉर्म एग्जैक्टली साइन वेव की तरह है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अब जैसे ये मैंने फॉर्म ड्रा किए, तो अगर आप देखें ये फॉर्म प्योर साइन वेव की तरह नहीं है, बट वी इमेजिन दैट दिस इज, क्योंकि मेरी इतनी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, सो वी इमेजिन दैट दिस इज ए pure sine wave. Now, if you know that it is pure sine wave, you don't have to do all the process of squaring the signal, taking mean of the signal, and then taking square root of the signal. All you need to do is measure the peak value of the signal and then multiply it with 0.707, and you can get the RMS value, and it will be an accurate RMS value for this signal. The problem in reality is that the actual signal are more often, they have at least some distortion, if not significant distortion. ठीक है? They have some distortion. So कुछ इस तरह से they might have some distortion. Now, because of this distortion, if you treat this waveform as a pure sine waveform and calculate your RMS value from the peak value, then your result will be inaccurate. A true RMS meter, since a true RMS meter doesn't use this shortcut, it follows the whole process and measures the square, mean, and square root of the signal. Therefore, a true RMS meter will not make this mistake. Some other times, for example, in the case of some crude, what they are called, जो UPS में use, some crude inverters, they use square waveform. Okay? Maybe like this. Maybe they use a square waveform like this, or a trapezoidal waveform. Okay? In this case, if you use a non-RMS voltmeter to measure the voltage or RMS value of this signal, of course, this formula is completely inaccurate. But a true RMS meter will not use this formula. True RMS meter doesn't assume that your input alternating voltage signal is a pure sine wave. So it will actually perform the mathematical operation, take square of the signal, okay? Then take mean of the signal, and then take root of the signal. And from there, it will measure the RMS value. It will give you the RMS value of the alternating voltage. Questions, students? Students? क्लियर है सर? यस ये आरएमएस की मीटर क्यों आरएमएस मीटर यूज करते हैं सर? एनी टाइप ऑफ सिग्नल पे यूज कर सकते हैं जिस फॉर्म में भी हो, साइन वेव के लिए जरूरी तो नहीं है? True RMS meter will give you RMS value of any type of signal. ठीक है? Any alternating voltage signal. ठीक है? A non-true RMS voltage meter will give you pretty fine result if the signal is a pure sine wave. But if the signal is a non-sine wave signal, alternating voltage signal, then a non-true RMS meter will give you error value. Means the value it will give you will have error. It will not be very accurate. That's all what I'm saying. Clear? Okay, sir. Okay. Now this is, if you want to measure RMS of value of the alternating voltage, all you need to do is go to the market and get a AC voltmeter. But then, if you want to be more precise and you are not sure that your AC voltage signal is a pure sine wave or not, then you should get a true RMS signal,
voltmeter, which is more expensive than your standard non-RMS voltmeters. Okay? On the other hand, if you are not only interested in RMS value of alternating voltage, but you actually want to see the shape of the signal, whether it is sine wave, whether it is a square wave, whether it's a triangular wave or sawtooth wave or whatever. Okay? If you are interested to see the actual graph of the input signal, alternating voltage signal, then in that case, you will be using an oscilloscope. Okay? Then you will use an oscilloscope. So what an oscilloscope does, it measures and visually displays magnitude versus time graph for a dynamic signal or a wide range of frequencies. It has a wide band width up to many gigahertz. So what is bandwidth? किसी को पता है, students? Students, किसी को bandwidth का पता है? या हाँ दें या ना जवाब दें? No, sir. अच्छा, so what is bandwidth? जैसा अभी मैंने आपको कहा था, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि हो सकता है एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है, उसकी यूजफुल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो है 40 हर्ट्ज से लेके, या चले हम कहते हैं 0 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक है. तो ये चले 40 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ क्या है, तो आप इसे दो तरीकों से कह सकते हैं. यू कैन आइदर से कि इट्स बैंडविड्थ, कि यानी फ्रीक्वेंसी की लोअर रेंज जो है 40 हर्ट्ज है और मैक्सिमम रेंज जो है 200 हर्ट्ज है. तो इसके दरमियान जितनी फ्रीक्वेंसी आती है फ्रॉम 40 टू 200, ये तमाम फ्रीक्वेंसीज जो है इस बैंडविड्थ के अंदर आती है, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. तो अभी यहां पर जो लिखा हुआ है बुलेट में, इट हैज ए वाइड बैंडविड्थ अप टू मेनी गीगाहर्ट्ज. इसका मतलब यह है कि अनलाइक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर which usually has a short bandwidth, an oscilloscope can have a very large or wide bandwidth. So a typical oscilloscope can measure from, let's say, 0 hertz to 40 megahertz. This is typical oscilloscope. 20 or 40 megahertz are a typical oscilloscope you see in your electronic labs. But usually nowadays, 100 megahertz, 500 megahertz, 1 gigahertz oscilloscopes are very common. Okay? So you can, when I say that this oscilloscope has a bandwidth of 5 gigahertz, what does that mean? That I can measure any alternating voltage signal with a frequency from 0 hertz, which will be 0 hertz alternating voltage signal is basically a DC signal, from a 0 hertz up to 5 billion hertz of frequency. Up clear, students? Yes, sir. Yes, So sir. so it is a very useful diagnostic tools. It provides visual output of signal. So because it gives you a graph. Okay? It can, like the modern digital oscilloscopes, can not only give you graph of alternating voltage or input signal, but at the same time it can do calculation for you, and it can, in terms of numerical value, it can show you the graph properties. So like, what is the magnitude, maximum magnitude of the graph? What is the RMS value of the graph? What is the frequency of the graph? What is the time delay or whatever? It can calculate all those things for you, the modern digital oscilloscopes. So it is a useful diagnostic tools because it shows you the magnitude of the signal. It shows you the frequency of the signal. At the same time, it shows you if there is any distortion in the signal. So this is a non-distorted sine wave. Okay? A distorted sine wave might have something like this. So if you are using a voltmeter, whether it's true voltmeter, true RMS voltmeter, or non-true RMS voltmeter, it doesn't shows you if the signal is a pure sine wave, or if it's a square wave, or a sine wave, or a triangular wave, or even if it's a sine wave, is it a
signal without any distortion, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रा किया था, और a signal that has distortion, ये जो अभी आपको spikes वगैरह नजर आ रहे हैं. So this is a distortion in the signal. ठीक है, that's what we mean by distortion. The next one is delineation of DC and AC component and superposition of noise and interference. Now, this delineation of AC and DC current. So you all know this signal. अगर voltage की हम बात करें, this is time and this is magnitude, voltage magnitude. तो इस तरह के सिग्नल को आप क्या कहते हैं? AC कहते हैं या DC कहते हैं? Students? DC। ये DC है. और इस तरह के सिग्नल को क्या कहेंगे? AC। अच्छा, AC। और इस तरह के सिग्नल को क्या कहेंगे? जी, ये AC है या DC है? हाँ, ये भी सर नहीं, AC नहीं है। हाँ, पोलैरिटी तो चेंज नहीं हो रही. नो जी, नहीं हो रही. so this is a basically an AC signal superimposed on a DC signal. ठीक है, अगर इन दो सिग्नल्स को मैं ऐड करूं, ये वाला सिग्नल, ठीक है, ये वाला सिग्नल और इस डीसी सिग्नल को अगर मैं ऐड कर लूं, तो इन दोनों सिग्नल से जो मेरे पास सिग्नल बनेगा, क्या वो यूं होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, मैथमेटिकली हम ऐड कर रहे हैं, यानी हर एक पॉइंट पे हम ये वैल्यू लेते हैं और ये वैल्यू, इन दोनों को आपस में, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है. ठीक है, एंड सो ऑन वी डू फॉर ऑल द पॉइंट्स. सो दिस इज बेसिकली AC combination of AC and DC. ठीक है, now if we use simple voltmeter, it will not be able to tell you imposed AC signal. ठीक है, but if you plot the graph of this signal, then you can tell from it that it is neither a pure AC signal nor a pure DC signal. It is possibly a DC imposed AC signal. ठीक है, दोनों की एडिशन से आपके पास. So I mean, this is just showing you the power of oscilloscope, that this measurement instrument is a very valuable asset for specifically electronic engineers as well as electrical engineers, and a lot of mechanical engineers of course use them. Especially if you are working on digital circuits or control circuits, okay, and if you need to debug them or you need to study the sensor data or instrument data, so you will be using a oscilloscope. आगे जाऊं, students? यस सर। यस सर। So superposition, noise and interference. Noise and interference हमने chapter 1 में discuss किया था. So if you plot a signal, you can tell whether this signal has some noise or it has interference. The difference between noise and interference is that noise is a random unwanted signal and interference is also an unwanted signal, but it is not random, it is systematic. You can see a trend in a interference. ठीक है? It can also perform mathematical operations on a single or multiple signals. So it can add. So this is kind of just like in your regular graph. Sometimes you plot a single graph on a single paper. Other times you can plot two signal on the same graph if their units are the same. ठीक है? Even if they are different, we can use multi-axis graphs to draw two plots or maybe even more. ठीक है? Oscilloscope can do the same. So typically we call it channel of an oscilloscope. So typically you have at least two channel oscilloscope, even though there are some single channel oscilloscopes. A two channel oscilloscope means that this is where we connect a signal. So a two channel oscilloscope will mean that it has capacity to measure two signals simultaneously,
and it can plot those two signals on the on the screen at the same time. So typically there are 2-channel oscilloscope, then there are 3-channel oscilloscope or 4-channel oscilloscope as well. These are the typical configurations. So if you have multiple signals, and if you need, you can basically, oscilloscope can help you add those two signals into a single composite signal, or subtract one signal from another, or do some other mathematical operation, whatever you desire. Okay? This is like the modern digital oscilloscope has a built-in, you can say it has a built-in computer in it. So you can perform a lot of computations on the signal in the oscilloscope device. Okay? Including of the example of that is FFT, fast Fourier transforms. ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स? No, sir. अच्छा, चलिए. So I'm not going to go into that. If you're interested, just Google it and you will get an idea. It's basically if you have a alternating signal, a varying signal with a frequency, and with this mathematical technique, you can find out the different frequencies present in that signal. So if you have a composite signal of multiple frequencies, and visually you cannot tell what are the frequencies of the constituting signals for the composite signal, but if you use the FFT mathematical technique, you can get values of the constituent frequencies for the composite signal. Then we have storage oscilloscopes. Now, storage oscilloscopes are oscilloscopes that can store the signal for you. So, for example, if you are measuring certain signal and you want to save that signal and read that signal later on, so a storage oscilloscope can help you do that. Okay? As I said, most of the new digital oscilloscopes are like full-fledged computers. It uses hard disks. You can store a signal that you have measured on some digital media, including USB, or send it over the network to your computers and so on. Okay. Next. Now, of course, nowadays, digital oscilloscopes are very common and very popular. But before the digital oscilloscopes, we used to have analog oscilloscopes. Okay? And analog oscilloscopes analog oscilloscope used to use CRT tubes, cathode ray tubes. कितने लोगों को पता है CRT tubes के बारे में? Students? No, sir, पता नहीं है. CRT tubes का नहीं पता? अच्छा. टीवी में हाँ, जो टीवी में यूज होते थे. कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल. कैथोड रे ट्यूब्स FEC में नहीं पढ़े? पढ़े सर. ठीक है. So what does it do? If you look here, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कैथोड रे गन है. This is cathode ray gun. So cathode ray जो है, it basically fires a stream of electrons. It fires a stream of electron. Now, if this stream of electron, if it hits the cathode ray tube at this point, for example, at this point, ठीक है, now this point will light up. This point will light up. Now, if there's any way for me to move this stream of electrons up and down, if I can make it move up and down, then it will create a signal like this, up and down signal. Okay? At the same time, if I have any mechanism to move this cathode ray, this electron beam sidewise, and at the same time up and down, then I can create a signal on the screen of my desire. ठीक है? अगर इस समझा रही है ना इस बात के? It's like a laser pointer.
if you can move this laser pointer or the beam that it is projecting, if you can move that beam sidewise and up and down, then you can create a kind of a signal. क्योंकि cathode ray tube का behavior ऐसा है, when the electron strikes the phosphorus screen, the phosphorus screen point where the electron strikes glows, and it glows even though if you stop the electrons ray hitting the phosphorus screen, immediately the glow doesn't ceases immediately, rather it will gradually die down. ठीक है, समझ आ रही है ना इस बात की? So this behavior let us trace a signal on the screen. ठीक है, trace a signal on the screen. Trace का मतलब क्या है कि we move the beam on the screen, and the previous part of the signal is still glowing while we move the beam to the next point and then to the next point, and the previous point is still glowing. Its glow is gradually decreasing, but it is still glowing. यहाँ तक clear है student? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So how can we convert this phenomena to plot our electrical signal on the screen? How do we use this phenomena? So what we do, so if this is the beam, we have two electric plates, two horizontal electric plates. ठीक है? And these two horizontal electric plates are connected to timing circuit. So these two plates, the polarity of these two plates changes based on some timing circuit. So initially, let's suppose this is positive plate. So this plate is positive. And this plate is, so let's say initially this is negative and this is positive. Okay, so this plate is positive. Now what will happen to the electron beam? If one of the plate is negative, the other one is positive, what will happen? Students? सर ये एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा दूसरा repel करेगा. What will happen to the beam? The beam will, if this side is negative and this side is positive plate, well, what will happen to the beam? The beam will start moving in this direction, depending on how we make like how strong we make our plates polarity. ठीक है, अगर gradually if gradually I make this plate more positive and this plate more negative, what will happen to the beam? It will gradually move from negative plate further away from the negative plate and further towards the positive plate. Is it clear, students? Yes, sir. Now this variation of polarity is controlled by a timing circuit, okay, horizontal circuitry. While we have two horizontal plates, okay, and these two horizontal plates are connected to the mirrored signal. समझ आ रही है इस बात की? अब अगर शुरू में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेव फॉर्म है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, शुरू में polarity or magnitude of this AC signal is 0. There is no magnitude, ठीक है, और कोई polarity नहीं है. So what will happen to the beam? This beam will neither go up, because both the plates are neutral, they are neither positive or negatives. So this beam will neither go up nor go down. ठीक है?
Then as we reach this point of the signal, what will happen? Let's say that this signal, this is become positive, this becomes negative, and this is the strength of the signal. So this plate will become positive, this plate will become negative. What will happen to the beam? The beam will move upward. ठीक है? Upward move करेगा ना towards the positive plate. Yes, sir. ठीक है? Now, when we move from this point to this point, what will happen? This is still positive, but it is even more positive. And this is even more negative. So what will happen to the signals? It will move even further up. समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. And at the same time, the timing circuitry is moving in the horizontal direction, and the signal strength is making it move in the vertical direction. So the trace will be something like this. समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. समझ आ गई, sir. As we move this point, again, the strength of the positive plate reduces, the strength of the negative plate reduces. So our signal moves from peak to the lower value of positive, same polarity. When we move this zero point, what will happen? There will be no longer any polarity present. This plate will neither be positive, this plate will neither be negative. Okay? So our beam will strike here. Okay? Right at the center of the right at the vertical center of the screen. When we move in the opposite polarity, now this side becomes negative, this side becomes positive. So this plate now becomes negative, this plate becomes positive. What will happen to the beam? It will move from negative, it will move away from the negative side and towards the positive side. So it will start moving in this direction. Clear it, students? यहाँ तक? Yes, sir. So समझ आ गई. Yes, sir. ठीक है? That's how a analog oscilloscope works. How does a digital oscilloscope work? A digital oscilloscope is very simple device. Imagine you have your mobile, ठीक है? Or a simple tablet, a screen. And then what you do, you take electrical signal, uses an ADC circuit which converts this electrical analog signal into digital signal and feed that digital signal to through a USB cable to a tablet screen and plot that signal on your tablet. That's it. That's in simple word, in its simplest form, is your digital oscilloscope. So what is a digital oscilloscope? Basically, you have a computer with a screen, and this computer reads an analog signal by passing the analog signal through a analog to digital converter, which convert that analog signal into digital data, and then that computer displays that digital data on the screen itself. This is, in a nutshell, is what a digital oscilloscope is. What is an analog oscilloscope? I've explained it here on this slide. Okay. Any question? Then I'm taking the attendance for today. No, sir. No, sir. Okay, so let me take the attendance. And okay, I'm stopping the recording. I've taken the attendance.